Hello students, welcome to my channel Study of Life Science. Today I am going to start the unit number 9 बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। So coming to first topic, biotechnology principles and processes. In this topic mainly we are going to discuss what is meant by biotechnology. Then first point, principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology and processes of recombinant DNA technology. First, what is meant by biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी वर्ड बना है दो शब्द से, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। Here remember that biotechnology is one of the most important and applied branch of biology which have economic value. So what is meant by biotechnology then? Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human being. के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके एंजाइम्स और टेक्निक्स का यूज करके इंडस्ट्रियल स्केल पे डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन विच हैव इकोनॉमिक वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, ये जो सिट्रिक एसिड है इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग फंगस एस्परजिलस नाइगर, एंड दिस सिट्रिक एसिड इट हैव लॉट ऑफ यूजेस and economic to human being, and that's why different biotechnological processes they have economic aspect. There are two types of biotechnological processes. First जो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड सेकेंड है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ट्रेडिशनली कर्ड, ब्रेड, वाइन दे आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो ये सभी प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इज इन्वॉल्व, फॉर मेकिंग ब्रेड Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae is involved, for making wine brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae is involved, and that's why these are the biotechnological processes. अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग. Nowadays, by using modern biotechnological processes, large number of products are obtained on industrial scale, such as antibiotics, then acids, enzymes, vaccines, which have economic importance. Then various other techniques and processes which are included in biotechnology are: first is in vitro fertilization, which leads to the test tube baby. Second process, artificial synthesis of gene and its use for commercial purpose. Third, production of DNA vaccine on industrial scale. Fourth one, correcting defective gene. जैसे कि कोई fetus में defective gene है, वो उसे genetic disorder है, तो at embryonic stage it is now possible to remove that defective gene and insert functional gene only due to the recombinant DNA technology. Now the MCQs which can be asked in the NEET examination. First question, the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human being is called as. So at that time your answer should be biotechnology. Second MCQ that can be asked, the different techniques which are included under biotechnology are. So options will be given, you have to select the correct option. So here remember that process of test tube baby, that is in vitro fertilization which leads to test tube baby, then artificial synthesis of gene, production of DNA vaccine, correcting defective gene, these are also included under biotechnology. Students, if you have any doubt you can ask me in the comment. Now coming to next point, definition given by EFB. EFB stands for European Federation of Biotechnology. They had given the definition which consists of both the traditional and modern view of molecular biotechnology. So according to them, what is definition? The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. कि जब हम कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में, एट द टाइम वी नीड द हेल्प ऑफ नेचुरल साइंस, जैसे कि कोई वेरियस फिजिकल टेक्निक्स, केमिकल टेक्निक्स, इनका हेल्प लेके, एंड वी नीड द लाइव ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स, पार्ट्स या इधर मोलिकुलर एनालॉग जैसे कि डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. Next point, principles of biotechnology. That means what is the basis of biotechnology. Modern biotechnology has two main core techniques. First is genetic engineering, which is also called as recombinant DNA technology, and second is bioprocess engineering. First we will discuss genetic engineering. Genetic engineering or recombinant DNA technology क्या है? तो it is nothing but the techniques to alter the chemistry of genetic material, that is DNA and RNA, and to introduce it into the host organism so that the phenotype of the host organism will get changed. कि जब हम डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री चेंज करते हैं और उसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, एट दैट टाइम द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट विल गेट चेंज. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन
ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या किया जाता है, ये कंप्लीट डीएनए का जो सेट है इसमें से इंसुलिन जीन को कट किया जाता है, वैसे ही प्लाज्मिड डीएनए को कट किया जाता है बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अभी ये जो इंसुलिन का जीन है इसे लाइगेट करते हैं प्लाज्मिड से। सो हियर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ इंसुलिन जीन टू द प्लाज्मिड वेक्टर। अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इससे इंसर्ट किया जाता है होस्ट सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया इश्चरिशिया कोलाई। अभी इस बैक्टीरिया का यहाँ पे कल्चर मीडिया पे ग्रो करके उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन प्रोटीन कैन बी रिकवर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया का जो फिनोटाइप है हमने डीएनए इंसर्ट करने की वजह से, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने की वजह से चेंज हो जाता है। दैट बैक्टीरिया गॉट द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन विच इज प्रोटीन इन नेचर। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना है इंडस्ट्री में। एट दैट टाइम मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन इज इम्पोर्टेंट सो दैट ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब एंड यूकैरियोटिक सेल विल ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज। अदरवाइज प्रोडक्शन जो है प्रॉपर होता नहीं है। तो कंटेमिनेशन फ्री एरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, और उसके लिए वेरियस केमिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। दैट इज नथिंग बट द बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। Tools of recombinant DNA technology. So important tools or key tools which are required for recombinant DNA technology, which is also called as genetic engineering, are first restriction enzymes, then polymerase enzymes, ligases, vectors, and the host organism. One by one we will discuss the tools of RDT. In that, first restriction enzymes. In 1963, two enzymes were isolated from the bacterium Escherichia coli, which was responsible for restricting the growth of bacteriophage. Out of that two enzymes, one enzyme, it was adding the methyl group to the bacterial DNA. So due to the addition of methyl group, bacterial DNA was protected, whereas the second enzyme, it was cutting the DNA of bacteriophage and thereby it restricted the growth of viruses inside the bacterial cell, and that's why that enzyme was later called as restriction endonuclease. After 5 years, first restriction endonuclease HIND2, it was isolated from the bacterium Haemophilus influenzae strain RD. तो इस HIND2 का फंक्शन क्या है? It was found that HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing specific sequence of 6 base pairs. तो ये HIND2 क्या करता है? DNA molecule में specific 6 base pairs को recognize करता है and cut the DNA molecule by recognizing these base pairs only, and that's why this specific base sequence is known as the recognition sequence for HIND2. तो ये जो बेस सीक्वेंसेस हैं जिसे HIND2 रिकॉग्नाइज करता है, that are called as recognition sequences for HIND2. So till now near about 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of the bacteria, and particular restriction enzyme recognizes the specific sequences of nucleotide in DNA molecules. Now naming of restriction endonuclease. Here we are taking the example of EcoR1, which was isolated from the bacteria Escherichia coli RY13. तो इस नेम पे पहला जो लेटर है it shows the genus of the bacteria, that is Escherichia. Second two letters they derived from species of the bacteria, that is coli, and third letter it shows the strain from which that enzyme was isolated, and Roman number 1 it indicate the order in which enzyme was isolated from that bacterium. Now types of restriction enzymes. These restriction enzymes, they belong to a larger class of enzymes called as nucleases, and these nucleases again they are of two types. First is exonucleases and second is endonucleases. Exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA. ये जो exonucleases हैं ये DNA के टर्मिनल एंड से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करते हैं, एंड एंडोन्यूक्लिएजेस दे मेक द कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए. एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स क्या करते हैं? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को इंटरनली कट करते हैं बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस. नो एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. So here this restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. Suppose here example of EcoR1 is given. This EcoR1 it first infect the whole length of the DNA molecule. After inspecting it recognize the specific recognition sequences. और उस पॉइंट पे वो डीएनए स्ट्रैंड को बाइंड होता है एंड कट 2 strands of the DNA double helix at specific positions in their sugar phosphate backbone. So this is the sugar phosphate backbone of DNA double helix. At this point, this restriction endonuclease make the cut internally
between the two strands of the DNA molecule. Now, important feature of restriction endonuclease. Each restriction endonuclease recognizes specific palindromic nucleotide sequences in the DNA. We know that DNA molecule is made up of deoxyribonucleotides. तो restriction endonuclease क्या करता है, DNA में जो palindromic nucleotide sequences होता है उनको recognize करता है, and at that point it make the cut internally in DNA molecule. So what is palindrome? Palindrome are nothing but the group of letters that form the same words when read both forward and backward. जैसे कि एग्जाम्पल है मलयालम, नितिन, मॉम, डैडी, इन वर्ड्स को हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करते हैं, तो एट दैट टाइम अल्फाबेट्स आर सेम. सो व्हाट इज पैलिंड्रोम इन डीएनए देम? पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम. कि हम डीएनए में जब बेस सीक्वेंसेस रीड करते हैं एट दैट टाइम दे आर सेम फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड सच बेस पेयर्स आर कॉल्ड एज ए पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 5'3' डायरेक्शन. जब हम 5'3' डायरेक्शन से दोनों स्ट्रैंड पे बेसिस रीड करते हैं एट दैट टाइम दे आर सेम. जैसे कि फर्स्ट स्ट्रैंड पे GAATTC, सेकेंड स्ट्रैंड पे GAATTC. सो दिस आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऑफ nucleotides. So what is another important feature of restriction endonuclease? Restriction endonuclease cut the strand of DNA little away from the center of the palindromic site but between the same two bases on the opposite strand. ये जो palindromic sequences हैं उसके सेंटर के थोड़े डिस्टेंस के बाद ये जो EcoR1 एंजाइम है दो DNA स्ट्रैंड को कट करता है बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड. जैसे कि फर्स्ट स्ट्रैंड पे G एंड A ये दो बेस के बीच में EcoR1 कट करता है, तो अपोजिट स्ट्रैंड पे भी G एंड A ये दो बेसेस के बीच में वो कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को. तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स तैयार होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स. व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड? बिकॉज these bases of the strand form the hydrogen bonding with their complementary bases, or this stickiness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase. Very important point कि जो stickiness ends produce होते हैं एक्शन ऑफ EcoR1 की वजह से, that stickiness facilitates the action of DNA ligase enzyme which is important for the formation of recombinant DNA molecule. In NEET examination question can be asked, the enzyme which facilitates the joining of DNA molecule due to the formation of sticky ends is, at that time your answer should be DNA ligase. We know that restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from two different sources or genomes, और two different DNA जब हम same restriction enzymes से कट करते हैं at that time the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligases enzyme. की जो sticky ends produce होते हैं due to action of EcoR1 enzyme or any restriction endonuclease enzyme, at that time they facilitates the action of DNA ligases enzymes. Here diagrammatic representation of recombinant DNA technology is given. Foreign DNA and vector DNA both are cut by the same restriction endonuclease at specific point, और जो fragments तैयार होता है foreign DNA का that is joined with the plasmid DNA with the help of enzyme ligases. So like such way recombinant DNA molecule is formed, then it is transferred into the host organism that is Escherichia coli bacteria. That process is called as a transformation. तो ये जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर होने के बाद इट रेप्लिकेट अलोंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, और आफ्टर 24 आवर्स मिलियंस नंबर्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म इनसाइड द होस्ट सेल, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग व्हिच इज कैरिड आउट बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो हियर एमसीक्यू, which are the two core techniques of modern biotechnology? At that time your answer should be genetic engineering and bioprocess engineering. So another MCQ question can be asked, if desired microorganism or eukaryotic cell have to be grown in large quantities for the manufacture of biotechnological products, at that time what is the basic requirement? So your answer should be maintenance of sterile ambience in chemical engineering. Next point of our topic, conceptual development of the principles of genetic engineering. That means how genetic engineering techniques have been developed. So there are various reasons, one by one we will discuss. So first we know that sexual reproduction has advantages over asexual reproduction, because in sexually reproducing organism we observe the variations in next generation. asexual reproducing organism में genetic information जो है preserve रहती है, there is no variation in next generation, and the progeny cells they are genetically identical to each other. Traditionally hybridization techniques was used for plant and animal breeding. तो इस मेथड से भी plant and animal में along with desirable genes, undesirable genes also get introduced. That is also one of the drawback of that traditional hybridization techniques.
So all these limitations and drawbacks have been overcome due to the introduction of genetic engineering technique, which is also called as recombinant DNA technology. क्योंकि इस टेक्निक में हम डिजायर्ड जो जीन है, टारगेट जो जीन है, that can be introduced into the host organism. So the various techniques of the recombinant DNA technology include for creation of recombinant DNA, gene cloning and gene transfer. कि इस टेक्निक से हम recombinant DNA first बनाते हैं. That recombinant DNA then introduced into the host cell. Thereby there is formation of multiple copies of that recombinant DNA, which is called as a gene cloning. Gene cloning के बाद हमें ये particular gene target gene किसी another organism में ट्रांसफर करना है. We can transfer it by various gene transfer methods. So here in recombinant DNA technology, we can only introduce target gene, desired gene without introduction of undesirable genes. That is one of the most important aspect and application of genetic engineering techniques. Next point, what is fate of DNA when it is transferred into an alien organism? कि कोई DNA का फ्रैगमेंट है, स्पेसिफिक DNA मॉलिक्यूल है, हम जब बैक्टीरियल सेल में उसे ट्रांसफर करते हैं, at that time what is the fate of this DNA, what it do inside the cell? So this DNA, it will not multiply inside the bacterial cell and will not transfer into the progeny cells. Why? Because it is not a part of bacterial chromosome. लेकिन जब हम ये DNA मॉलिक्यूल बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, at that time it multiply along with the bacterial chromosome. कि कुछ बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मिड्स होते हैं, and these plasmids are nothing but the circular DNA molecule which have ability to replicate. और ऐसे क्रोमोसोम के साथ, प्लाज्मिड के साथ जब हम ये DNA को इंटीग्रेट करते हैं and when it is inserted into the bacterial cell, at that time it will multiply along with the bacterial cell and will make many copies inside the bacterial cell because it have now become the part of the bacterial chromosome. Here remember that in a chromosome there is a specific DNA sequence called origin of replication which is responsible for initiating replication. कि क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, that is called as a origin of replication. So here MCQ can be asked in the NET examination. The sequence of DNA on a chromosome responsible for initiating replication is called as, at that time your answer should be origin of replication. इसलिए किसी भी अलाइन पीस है, फॉरेन DNA है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है organism में, at that time it should be a part of chromosome and that chromosome should have specific DNA sequence known as origin of replication. इसलिए align DNA जो है, foreign DNA जो है, it is always linked with the origin of replication so that it will multiply itself inside the host cell and will make multiple copies, and this is called as a gene cloning or making multiple identical copies of any template DNA. Now next point, construction of first recombinant DNA. The first artificial recombinant DNA, it was constructed by two scientists, Herbert Boyer and Stanley Cohen. Herbert Boyer, he discovered the restriction enzymes which cut the DNA at specific location, whereas Stanley Cohen, he was working on plasmid. और उन्होंने क्या बताया कि plasmid can be removed from one bacterial cell and can again inserted into another bacterial cell. So these two scientists, they constructed the recombinant DNA molecule by using the plasmid of Salmonella typhimurium. तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस Salmonella typhimurium का प्लाज्मिड जो है उसके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ज्वाइन किया. इस for that purpose they first cut the DNA molecule of Salmonella typhimurium and also another plasmid having antibiotic resistant gene. So the cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of the so-called molecular scissors restriction enzymes. की जो restriction enzymes है, they are also called as molecular scissors. The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. This plasmid DNA act as vectors to the transfer of piece of DNA attached to it. ये जो plasmid है Salmonella typhimurium का, here it acts as a vector or vehicle to transfer the antibiotic resistance gene or DNA. So the linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase. So this enzyme DNA ligase play important role for joining the two DNA molecule. ये जो antibiotic resistant gene है, it was attached or linked with this Salmonella typhimurium plasmid with the help of enzyme DNA ligase, and like such way recombinant plasmid was formed by using two enzymes, that is restriction endonuclease and DNA ligase. ये जो recombinant DNA है, when it is transferred into Escherichia coli, a bacterium which is closely related to Salmonella,
It replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इशेरिशिया कोलाई सेल में रेप्लिकेट होता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. So the ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in Escherichia coli was called cloning of antibiotic resistant gene in Escherichia coli. That is nothing but the cloning of particular gene so that there is a formation of multiple copies of that gene in the bacterium. So here MCQ in NEET examination question can be asked, the cutting of DNA molecule became possible with the discovery of, at that time your answer should be restriction enzymes which are also called as molecular scissors. Another question, the DNA molecule which carry the template DNA into another cell is called as, at that time it is nothing but the plasmid DNA which is called as a vector. From the above discussion it is clear that there are three basic steps in genetically modifying organism. फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. देन सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट. जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आइडेंटिफाइड दोनों डीएनए है, उनको हमने ट्रांसफर किया होस्ट सेल में. देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी. और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है होस्ट सेल में. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द होस्ट सेल एंड देयर बाय लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Here MCQ in NEET examination question can be asked, which are the following steps in genetically modifying an organism? At that time 4 options will be given. You have to select the 3 correct options. Next point, separation and isolation of DNA fragments. We know that the cutting of DNA fragments is carried out by restriction endonuclease enzyme that results in the formation of fragments of DNA. और ये जो fragments है DNA के, they are isolated and separated by the technique known as agarose-gel electrophoresis. Why it is called as agarose-gel electrophoresis? Because agarose is used as a medium or matrix to carry out the process of electrophoresis. DNA fragment जो है negatively charged molecules होते हैं, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. और commonly used matrix जो है that is agarose, which is a natural polymer extracted from the seaweeds. So what is the principle of this agarose-gel electrophoresis? The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Agarose gel का sieving effect होता है due to the presence of pores. And that's why the smaller fragment they move fast through these pores of agarose gel, whereas larger fragment they move slow. So here MCQ in NEET examination question can be asked, the technique by which DNA fragments are separated and isolated is, at that time your answer should be agarose gel electrophoresis. Another MCQ, the DNA fragments are separated in gel electrophoresis according to their option में भी size, density, weight. At that time your answer should be size. Separated DNA fragment जो है visible light में और without staining cannot be observed. And to observe the separated DNA bands, they are first stained with a compound ethidium bromide and then exposed to UV radiation. Then we can observe the bright orange colored bands of DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to UV light. Here is PYQ. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of, at that time her answer is ethidium bromide exposed to UV radiation. Now the separated DNA bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. In NEET examination question can be asked, the step in which the bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece is known as, at that time your answer should be elution. Like such way, by using agarose gel electrophoresis, we can obtain the purified fragments of DNA which are joined with cloning vectors to form the recombinant DNA molecule. Here see the diagram showing the process of agarose gel electrophoresis. You can see the 4 wells. In first well, undigested DNA sample is added. In second, third and fourth well, digested sample of DNA is added. So here DNA fragments, they are negatively charged and they are allowed to move towards anode under an electric field through the matrix or medium that is agarose gel. ये जो agarose gel है ये porous नेचर का होता है and it provide the sieving effect and due to which DNA fragments get separated. So these DNA fragments they get separated according to their size. Smaller fragments they move fast, whereas largest fragment they move slow. So after complete separation, the DNA fragments they are stained with ethidium bromide and exposed to UV radiation, and you can observe the bright orange colored bands of DNA cloning vectors.
So plasmids and bacteriophages, these are most commonly used vectors in recombinant DNA technology, and they have ability to replicate within bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA. Plasmids क्या है? These are nothing but the extra chromosomal circular double-stranded DNA molecule present in the cytoplasm of some bacteria. Whereas bacteriophages, they are nothing but the viruses which infect the bacterial cells. So these bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells. जब bacteriophages bacterial cell को infect करते हैं, at that time large number of copies of their genome, that is DNA, is formed inside the bacterial cell. That means they have high copy number. Then some plasmids, they may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Whereas plasmids, they are present in some bacteria, and there may be 1 to 2 copies of plasmids in some bacteria, whereas in other bacteria their number may be 15 to 100. That means the copy number of plasmids are less comparatively to bacteriophages. If we are able to link an aligned piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. कि कोई aligned DNA है, foreign DNA है, हम किसी वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं, सपोज बैक्टीरियोफाज वेक्टर और प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं, एट दैट टाइम वी विल गेट द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड. सपोज बैक्टीरियोफाज के 1000 कॉपीज है, प्लाज्मिड के 100 कॉपीज है, एट दैट टाइम वी विल गेट द 1000 कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हेन वी लाइक इट विद बैक्टीरियोफाज वेक्टर, एंड व्हेन वी लाइक इट विद प्लाज्मिड वेक्टर वी विल गेट द 100 कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए molecule. That means when we ligate DNA to the vector which have high copy number, we will get the higher number of recombinant DNA molecule, and therefore vector should be selected in such a way that which have a high copy number, so that to get the higher number of target DNA, aligned piece of DNA inside the bacterial cell. Recently ऐसे vectors को select किया जाता है that will help easy linking of foreign DNA, and we can easily select recombinants from the non-recombinants. So coming to next point, what feature should be present in vector for gene cloning? So there are 3 important features that should be present in cloning vector. पहला feature क्या है? Every vector should have ORI region, that is nothing but the origin of replication. Second, it should have selectable marker, और vector में cloning sites proper present होना important होता है, so that we can ligate aligned piece of DNA into that region. Now here see the diagram of Escherichia coli cloning vector PBR322. P stands for plasmid, BR for Bolivar and Rodriguez, name of the scientist, and 322 is the serial number of the plasmid investigated in the laboratory of Herbert Boyer. यहाँ पे इस plasmid में ORI region होता है, that is nothing but the origin of replication. Then is the ROP, which is nothing but the replication of protein region. यहाँ पे 8 restriction sites हैं plasmid में. First PBU second, then PST1, PBU1, EcoR1, CLA1, HIND3, then BAMH1, SAL1. और 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. फर्स्ट फीचर ऑफ वेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ए ORI रीजन. It is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells. कि इस ORI रीजन से हम कोई एलियन और टारगेट डीएनए को ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं, एट दैट टाइम इट विल रेप्लिकेट अलॉन्ग विद दिस प्लाज्मिड डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल, एंड वेक्टर शुड बी सच अ वे दैट इट शुड फॉर्म द मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल, एंड its origin should support the high copy number, and therefore this sequence of plasmid is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. Here is PYQ. In a chromosome there is specific DNA sequence responsible for initiating replication. It is called as, at the time your answer should be ORI site or ORI region. Another feature that should be present in plasmid is selectable marker. These are nothing but the antibiotic resistant gene which helps in selection of transformants and eliminating the non-transformants bacteria. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम. जैसे कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया सेल में इंजेक्ट किया है, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मार्कर इन इश्चेरिशिया कोलाई, दीज आर नथिंग बट द एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. और नॉर्मल जो इश्चेरिशिया कोलाई सेल है उनमें इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट फीचर दैट शुड प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट. सो क्लोनिंग साइट ऐसा रीजन होता है जहाँ पे पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है प्लाज्मिड को कट करता है, जैसे कि BAMH1 एंजाइम टेट्रासाइक्लिन रीजन में प्लाज्मिड को कट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट ऑफ BAMH1
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो प्लाज्मिड में सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है। जब ये बाम H1 अदर रीजन में भी कट करता है प्लाज्मिड को, एट दैट टाइम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेवरल फ्रैगमेंट्स एंड दैट विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग प्रोसीजर एंड देयरफॉर प्लाज्मिड शुड हैव सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट फॉर इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया जाता है एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट अलोंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। और ये बैक्टीरिया जब हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करते हैं, एट दैट टाइम ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया विल ग्रो। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मीडियम पे हम ग्रो करते हैं, एट दैट टाइम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो बिकॉज प्लाज्मिड हैव लूज द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो बैक्टीरिया है दे विल ग्रो ऑन बोथ द एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। जैसे कि यहाँ पे हमने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को ऑब्टेन किया है। दैट मीन्स वन एंटीबायोटिक विल सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड अदर एंटीबायोटिक will lose the resistance due to the insertion of foreign DNA molecule. So like such way selectable marker help in identifying the transformant bacteria and eliminating the non-transformants. Selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure क्योंकि इस मेथड में दो कल्चर मीडिया having two different antibiotics, that is one medium containing ampicillin antibiotic and other medium containing the tetracycline antibiotic have to be used for culturing the bacteria, and this is time consuming procedure and therefore alternative marker have been developed which is nothing but the enzyme which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. इस मेथड में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एनकोड करने वाला जो जीन होता है उसके कोडिंग सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, ड्यू टू विच देयर इज इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज ए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. When this recombinant plasmid is inserted into the host, that is Escherichia coli bacteria, at that time due to the inactivation of the gene responsible for the synthesis of beta galactosidase, there is no degradation of the chromogenic substrate present in the medium, and thereby we observe the white color colonies on the medium, and these colonies are identified as recombinant colonies. If recombinant plasmid is not entered inside the bacterial cell, at that time what happen? These bacteria are able to synthesize the enzyme beta galactosidase, and there is degradation of chromogenic substrate present in the medium, and thereby we observe the blue colored colonies on the medium, and these are identified as a colonies of non-recombinant bacteria. There are many PYQs on the point cloning vectors. I have already uploaded the videos on my channel Study of Life Science. You watch it, and if you have any doubt can ask me in the comment. The next point or topic, vectors for cloning genes in plants and animals. Nowadays due to recombinant DNA technology, it is possible to insert the desired or target DNA into various plants and animal cells. In plants the vectors used are tumor inducing plasmid, which is in short called as TI plasmid, whereas in animals the vectors used are retroviruses. First we are going to discuss vectors for gene cloning in plants. एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस नाम का जो पैथोजन है इट कॉजेज क्राउन गॉल डिसीज इन सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, और इस बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है विच कंसिस्ट ऑफ टी डीएनए. सो दिस टी डीएनए ऑफ द पैथोजन गेट एंटर्ड और डिलीवर्ड इनटू नॉर्मल सेल्स, एंड दैट नॉर्मल प्लांट सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ट्यूमर सेल्स. और ये जो ट्यूमर सेल्स हैं दे प्रोड्यूस द केमिकल्स which are required by the pathogen to cause the disease. Nowadays, tumor inducing, that is TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has been modified into a cloning vector. और इस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टी डीएनए को न्यूट्रलाइज करते हैं so that it will not pathogenic to the plants. और इस टी डीएनए रीजन में जब कोई टारगेट और डिजायर्ड जीन को हम इंसर्ट करते हैं टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड को जब प्लांट सेल में इंसर्ट किया जाता है एट दैट टाइम इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोम ऑफ प्लांट सेल्स, एंड देयर बाय प्लांट सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ न्यू जीन. एंड लाइक सच वे दिस tumor inducing plasmid has been one of the most important vector in plants for gene cloning. Here is PYQ. The TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for, at that time your answer is tumor inducing plasmid. In animals, retroviruses are used as vectors for gene cloning, and these have ability to transform normal cells into cancerous cells. और जब retroviruses को as a vector use करते हैं at that time tumor inducing gene जो होता है that is neutralized so that it will not cause cancer in human being and animals. और इस gene के साथ
टारगेट डीएनए को डिजायर्ड डीएनए को ज्वाइन किया जाता है टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल विच इज देन इंसर्टेड इनटू एनिमल सेल और ह्यूमन सेल. Here is PYQ. Which of the following is a commonly used vector for transferring DNA fragment into human lymphocytes? At that time your answer should be retrovirus. We know that different tools are used in recombinant DNA technology such as restriction enzymes, DNA polymerase enzyme, DNA ligase, vectors, then host. So last tool that we are going to discuss in this topic is competent host for transformation with recombinant DNA. So we know that transformation is the procedure in which DNA is transferred into the host cell. Mostly bacteria is used as a host in recombinant DNA technology. We know that DNA is a hydrophilic molecule and cell membrane consists of phospholipid bilayer, and that's why DNA molecule cannot easily pass through the cell membrane. So in order to take the recombinant plasmid inside the bacterial cells, that bacteria have to first made competent, and for that purpose various treatments are given to the bacterial cell. First method, in this bacteria are treated with specific concentration of a divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters into the bacterial cell due to the formation of pores in the cell wall of the bacteria. Divalent cation calcium के ट्रीटमेंट की वजह से बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोर्स क्रिएट्स होते हैं, which makes easy entry of recombinant plasmid inside the bacterial cell. Now the suspension having recombinant DNA and bacterial cells are incubated on ice. After that, heat shock is given briefly at 42 degrees Celsius, and again this suspension is placed on ice. Again heat shock is given at 42 degrees Celsius. So such treatment is carried out for 2 minutes. इस ट्रीटमेंट से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बैक्टीरिया के सेल में इजीली एंटर होता है. अदर मेथड्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर द एलियन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंक्लूड माइक्रो इंजेक्शन, देन बायोलिस्टिक्स और जीन गन, एंड थर्ड वन इज द डिसआर्म पैथोजन. फर्स्ट माइक्रो इंजेक्शन. इस मेथड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द जीन डायरेक्टली इनटू एग्स, oocytes एंड द embryo. Here MCQ can be asked in the NET examination. To make the bacteria competent for transformation, the metal which is used is, at that time your answer should be divalent cation calcium. Another MCQ, the method in which the gene is directly injected into the nucleus of an animal cell is called as, at that time your answer should be micro injection. Now second method, biolistics or gene gun. In this method, DNA is coated with microparticles of gold or tungsten and that are bombarded with high velocity onto the plant cells so that there is easy entry of the DNA inside the plant cells. Here is PYQ. In gene gun, DNA is coated with microparticles of, at that time answer is gold or tungsten. Last method, disarmed pathogen vectors. So they are allowed to infect the cell, thereby they transfer the target DNA or recombinant DNA inside the host cell. जैसे कि TI plasmid and retroviruses, they possesses the tumor inducing genes and they are neutralized. न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, उनकी पैथोजेनिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, देयर बाय दे विल नॉट कॉज इन्फेक्शन इन द plant and animal cell, and therefore TI plasmids are used as disarm pathogen vector in plants, and retroviruses are used as a disarm pathogen vector to transfer the recombinant DNA or foreign DNA into the animal cells. So here is MCQ. Following are the disarm pathogen vectors. At that time your answer should be TI plasmid and retroviruses. Processes of recombinant DNA technology. We know that modern biotechnological process, that is recombinant DNA technology, which is also called as genetic engineering, is carried out in several steps but in a specific sequence. The first step क्या है, isolation of DNA. Second is fragmentation of DNA by restriction endonucleases. Third is isolation of desired DNA fragment. Then fourth is ligation of the DNA fragment into a vector. Fifth is transferring the recombinant DNA into the host cell. Sixth, culturing the host cells in a medium at large scale. And seventh, the extraction of the desired product. And in such sequence, the process of genetic engineering is carried out on industrial scale also for production of different products and their extraction. Here is PYQ. Arrange the steps of process of recombinant DNA technology. At that time, you should know all the steps in sequence.
Now one by one we will discuss the steps of recombinant DNA technology. First is isolation of the genetic material. We know that DNA is the genetic material of all living organisms except some viruses which have RNA as the genetic material. जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए जब हमें डीएनए कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, एट दैट टाइम दैट डीएनए शुड बी प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, दैट इज free from other macromolecules, or we know that DNA is enclosed within the cell membrane, so that cell have to break open to release the DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and lipids. डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स का यूज किया जाता है. जैसे कि बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करना है, एट द टाइम एंजाइम यूज्ड इज लाइसोजाइम. प्लांट सेल को ब्रेक करना है तो एंजाइम सेलुलेज का यूज किया जाता है. फंगल सेल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज्ड इज काइटिनेज. सेल में से डीएनए के साथ डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, एंड ऑल दिस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो रिमूव्ड बाय स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सच एज आरएनए आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज. Proteins are removed by using the enzyme protease, and other different macromolecules are also removed by giving appropriate treatments such as centrifugation. Various other physical treatments also used to remove the different macromolecules. Now in the suspension there remains DNA, और इसमें जब हम chilled ethanol ऐड करते हैं, at that time purified DNA get precipitated and we can see the collection of fine threads in the suspension. And like such way DNA can be isolated by giving treatment of various enzymes and appropriate physical methods. So here is PYQ. The purified DNA is precipitated after addition of, at that time answer is chilled ethanol. In NET examination question can be asked to break open the bacterial cell. Enzyme used is, at that time answer is lysozyme. Now second step, cutting of DNA at specific locations. इस स्टेप में प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को साथ में इंक्यूबेट किया जाता है एट ऑप्टिमल कंडीशंस to form the fragments of DNA molecule, and this process is called as restriction enzyme digestion. And to check the progression of restriction enzyme digestion, agarose gel electrophoresis is used. इस टेक्निक में फर्स्ट वेल में डीएनए सैंपल को ऐड किया जाता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ वेल में फ्रेगमेंटेड डीएनए सैंपल इज एडेड. Now we know that DNA is negatively charged and it moves towards the anode, that is positively charged electrode. So here DNA fragments get separated according to their size due to the sieving effect of agarose. So here the same process is repeated for vector DNA also. Now the source DNA, that is target DNA and vector DNA, both are mixed together and then enzyme ligase is added to form the recombinant DNA molecule. Here is MCQ. The progression of restriction enzyme digestion is checked by the following technique. At that time your answer should be agarose gel electrophoresis. Next point of our topic, amplification of gene of interest using PCR. Amplification is the process by which multiple copies of gene of interest or desired DNA is carried out. And in the laboratory, that amplification of gene of interest is carried out by using the PCR, that is polymerase chain reaction, by using the PCR machines. And this technique, it was discovered by the scientist Kary Mullis in 1985. In this reaction, multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro. जब हम लेबोरेटरी में किसी बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं उसे कहते हैं इन विट्रो सिंथेसिस, और जब सेल में किसी बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है दैट एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज ए इन विवो सिंथेसिस. सो पीसीआर इज नथिंग बट द in vitro replication of DNA molecule. In vitro replication of DNA molecule. So for PCR technique, components required are two sets of primers, then DNA template, enzyme DNA polymerase, 4 deoxyribonucleotides for the synthesis of DNA strand. So we know that two sets of primers are required. They are nothing but the small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. ये जो primers होते हैं they consist of near about 13 to 25 nucleotides and that's why they are called as a oligonucleotides. और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है प्राइमर का डीएनए टेम्पलेट को बाइंडिंग होने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ऐड करता है एंड देयर बाय देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द 2 strands ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. नाउ स्टेप्स ऑफ सिंगल साइकिल ऑफ पीसीआर. फर्स्ट स्टेप है डिनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन. डिनेचुरेशन स्टेप में डीएनए सैंपल को 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है. हीटिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं 2 strands के बीच वो ब्रेक होते हैं and thereby 2 strands of the DNA get separated. Second step annealing. इस स्टेप में DNA templates को प्राइमर का बाइंडिंग होता है and this process it is carried out at
55 to 65 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेप एक्सटेंशन, इस स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्राइमर को एक्सटेंड करता है बाय एडिंग deoxyribonucleotides present in the reaction mixture, and like such way 2 new DNA strands are formed in one PCR cycle. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, that is 1 billion copies are made after 30 cycles of PCR. So remember this, in NEET examination question can be asked 1 billion copies of DNA molecule can be obtained in PCR machine after how many cycles? At the time your answer should be 30 cycles. So here is PYQ, give the correct sequence of steps of PCR, that is polymerase chain reaction. At that time your answer should be first step denaturation, second annealing, and third extension. Amplification of gene by PCR is possible due to the use of thermostable DNA polymerase enzyme which was isolated from the bacterium Thermus aquaticus. Because ये जो बैक्टीरिया है it lives in hot springs जहाँ पे टेम्परेचर होता है near about 100 to 150 degree Celsius, and therefore this enzyme can tolerate the temperature of 95 degree Celsius which is maintained for denaturation process. So here the desired amplified segment of DNA molecule now can be used to ligate with a vector for further gene cloning. Here is PYQ, thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from, at that time your answer should be Thermus aquaticus. Now next step of recombinant DNA technology, insertion of recombinant DNA into host cell or organism. We know that there are different methods for introduction of ligated DNA or recombinant DNA into recipient cells or host cells, सच है जैसे कि बैक्टीरिया में हिटशॉक मेथड का यूज़ किया जाता है, इन प्लांट देयर इज जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड इज यूज्ड, एनिमल सेल में डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन मेथड से इंजेक्ट किया जाता है फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. सो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन एनी रेसिपिएंट सेल और होस्ट सेल, दैट सेल्स फर्स्ट शुड मेड competent so that they will easily take up the DNA present in the surrounding medium. For example, if a recombinant DNA having gene for resistance to an antibiotic ampicillin is transferred into Escherichia coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. कि ampicillin resistance वाला जीन जब Escherichia coli सेल में ट्रांसफर किया जाता है for cloning purposes, at that time Escherichia coli cells get transformed into ampicillin resistant cells. और ऐसे बैक्टीरिया को जब अगर प्लेट्स पे ग्रो किया जाता है हैविंग एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, एट दैट टाइम ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल्स विल डाई. तो यहाँ पे एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स की वजह से वी कैन सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन. तो इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है इट इज कॉल्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर बिकॉज वी कैन सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम अनट्रांसफॉर्मेंट्स. हियर इज MCQ. In NEET examination, question can be asked. In genetic engineering, antibiotics are used as, at that time your answer should be selectable marker. Now last step of recombinant DNA technology, culturing the host cell and obtaining the gene product. So when you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. और सभी recombinant technology का ultimate aim क्या है? To produce a desirable protein. Hence, recombinant DNA should be expressed and the foreign gene gets expressed under appropriate conditions. कि जो recombinant DNA insert किया है host cell में it should be expressed. Gene expression क्या है? It is nothing but the phenomena in which there is production of protein or enzyme. Or if gene of interest or foreign gene is cloned inside the host cells, एंड ऐसे सेल्स को जब लेबोरेटरी मीडियम पे ग्रो किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल द ऑप्टिमम कंडीशंस, एट दैट टाइम देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन. और उस प्रोटीन का जब प्रॉपर अमाउंट में प्रोडक्शन होता है देन एंड ओनली दैट प्रोजेक्ट इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called as a recombinant protein. For example, इंसुलिन प्रोटीन एनकोड करने वाला जो जीन होता है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम एंड देन इट इज इंसर्टेड इनटू इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और जब ये इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं एट दैट टाइम दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंड इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया हियर इज कॉल्ड एज ए हेटेरोलॉगस होस्ट. हियर इज MCQ. The protein which is produced in heterologous host is called as, at that time your answer should be recombinant protein. The cells having cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. और ऐसे कल्चर से प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है and then that protein is purified by using different separation techniques.
So another method, the cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other side to maintain the cells in their physiologically most active log or exponential phase. This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yields of desired protein. The continuous culture system में क्या किया जाता है, स्टराइल फ्रेश मीडियम जो है कंटिन्यूसली इनोकुलेशन टैंक में ऐड किया जाता है जहाँ पे होस्ट सेल क्लोन सेल्स को ग्रो करते हैं, और जो यूज्ड सेल्स है, यूज्ड मीडियम है, दैट इज देन कलेक्टेड इनटू दिस कल्चर बॉटल एंड देन इट इज ड्रेन्ड आउट। कंटिन्यूसली फ्रेश मीडियम ऐड करने की वजह से सेल्स जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रहते हैं एंड ड्यू टू विच देयर इज लार्जर production of biomass and also higher yield of desired protein is obtained by this continuous culture system. To obtain the products on industrial scale in large quantities, fermentation tank, which are also called as bioreactors, are used in which near about 100 to 1000 liters of culture can be processed. So what are these bioreactors? These are nothing but the vessels in which raw materials are biologically converted into specific products and individual enzymes by using microbial plant, animal और human cells. कि bioreactor में raw materials को add किया जाता है, कल्चर सेल को ऐड किया जाता है, दैट में बैक्टीरियल सेल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल, एंड दैट रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. So what is the feature of bioreactor? The bioreactor provides different optimum growth conditions for achieving the desired product. Conditions such as maintenance of temperature, pH, then different substrates like nutrients, then salts, vitamin, oxygen, all that are the different optimum conditions that should be maintained in the bioreactor. The most commonly used bioreactors are of stirring type. So here see the diagram. First, simple stir tank bioreactor. Second, sparge stir tank bioreactor through which sterile air bubbles are sparged. ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, दे आर मोस्टली सिलेंड्रिकल इन शेप और हैविंग ए कर्व्ड बेस. इनका मेन फीचर क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ स्टरर विच फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी throughout the bioreactor. When you see the diagram, at the time you can observe the different systems present in the bioreactor, such as agitator system which helps in rotation of motor, then oxygen delivery system, foam control system. ये जो foam breaker होता है, it break the foam which is formed during the production process. Then there is temperature control system, pH control system and sampling port, जैसे कि inlet pipe जहाँ से कल्चर मीडिया और कल्चर को ऐड किया जाता है, and outlet pipe through which culture can be withdrawn periodically. So here is MCQ. The vessel in which raw materials are biologically converted into specific products is called as, at the time your answer should be bioreactors. So here is PYQ. In the given figure, the part of bioreactor which is used as a foam breaker is. So at that time you have to identify the part of the bioreactor. Now last point of our topic, downstream processing. After completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing. बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्रोसेसेस से प्यूरिफाई किया जाता है, देन एंड देन इट इज़ मार्केटेड. और जो भी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. Here is MCQ. The processes which include separation and purification of product are called as, at that time your answer should be downstream processing. प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के बाद उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, एंड इफ प्रोडक्ट इज ड्रग्ड इट हैव टू अंडरगो थॉरो क्लिनिकल ट्रायल्स. फॉर एवरी प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड. और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जितने भी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. लाइक सच वे बाय यूजिंग steps of recombinant DNA technology, nowadays large number of products they are obtained on industrial scale. Students, we have completed this topic. I have already uploaded PYQs on this topic. If you have any doubt, you can ask me in the comment. Thank you.